देख पिला माने आगुरी जो मु 3-4टा क्लास नेली सेगुड़ा सब हूँ बेसिक जिनस तेणु ताकू समस्ते मन दे पढ़ो तापरे आज जोटा हूँ यहाँ कोर्स भितर को आम गले तेणु प्रथम गुड़ा न जानिले एगुड़ा तुम बुझीपार ना तेणु सेगुड़ा को बारंबार पढ़ो तापरे एठू आम बर्तमान आमर सिलेबस आरंभ करुचे जोटा कि रिलेशन एमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ केस 1 इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर in case of concave mirror. Here XY represents the concave mirror. Here XY represents the concave mirror. Of which P is the pole. P is the pole and C is the center of curvature. Now light moving from the object O falls upon the mirror at the point A and is reflected along AI and is reflected along AI. That is, I represent the image of the object O. Now, a normal is drawn
from the point A to the principal axis. Such that it will meet it at the point N. Here PO is equal to object distance is equal to P, PI image distance is equal to Q, PC radius of curvature is equal to R. Let Pn is equal to delta An is equal to y, angle AON is equal to alpha, ACN is equal to theta, AIN is equal to phi. ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଯେ ଏଠି एक्स वाई रिप्रेजेंट द concave mirror of which P is the pole, the middle point of the mirror is known as pole. C represents the center of curvature. Any line passing through pole and center of curvature is known as principal axis. O represents the object and light moving from the object falls upon the mirror at the point A and is reflected along AI such that it will cut the principal axis at the point I. So, I represents the image of the object O. Now, AC is joined. A normal is drawn from the point A to the principal axis and the length of the normal is considered to be y and the distance from the pole to the normal, let it be delta. Now, this angle is considered to be alpha, this angle is considered to be theta and this angle is considered to be phi. Now, considering the triangle AOC, देख सब गुड़ा एका भाया आउ गोटे लंग क्वेश्चन भी एका भाया पड़ो तेणु ये गोटे बुझिले आरटा इजिली बुझी हम. नाउ कंसीडरिंग द ट्रायंगल AOC त्रिभुजर देख यहीटा जेहेतु इंसिडेंट रे यहीटा हूँ नॉर्मल, सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहीटा हूँ रिफ्लेक्टेड रे एटा नॉर्मल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ कंसीडरिंग द ट्रायंगल AOC द एक्सटेंडेड एंगल बा बहिस्थ कोणटा है थीटा. बहिस्थ कौन सी त्रिभुजर बहिस्थ कोण तार अंतरस्थ दूरवर्ती कोणद्वयर समष्टि संगे समान. तमें थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई. थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई.
Again considering the triangle ACI. Again considering the triangle ACI. ACI त्रिभुजर सेमती बहिस्थ कोण है φ सी अंतरस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर समष्टि संगे समान तेणु φ इज इक्वल टू थीटा प्लस आर φ इज इक्वल टू थीटा प्लस आर दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2 नाउ सब्ट्रैक्टिंग equation 2 from equation 1. Now subtracting equation 2 from 1. 1  lu 2 बियोग करो तेणु 1 टा थिला थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई एटा थिला फाइ इज इक्वल टू थीटा प्लस आर ताको हमें बियोग कले माइनस 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 तेणु ये है बाँ पाखे रहा थीटा माइनस फाइ इज इक्वल टू आई जहाँ आर से कटिगला जेहेतु एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एटा कटिगला तेणु डाहाण पाखे रहा अल्फा माइनस थीटा और थीटा को एपर की आनी तेणु 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा एटा आर पर की गला अल्फा प्लस फाइ सजे की लिखले दैट इज अल्फा प्लस फाइ इज इक्वल टू 2 थीटा अल्फा प्लस फाइ इज इक्वल टू 2 थीटा दिस इज योर इक्वेशन 3. Now considering the triangle AON. Now considering the triangle AON. Now considering the triangle AON, tan alpha. Tan alpha is equal to P by B. ए ओ एन त्रिभुजर टेन अल्फा है पी है एन बी है ओ एन बाई ओ एन बाई ओ एन बाई ओ एन तेणु एन टा है वाई ओ एन टा को करदेले पीओ माइनस पी एन इज इक्वल टू वाई बाई पीओ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पी माइनस पी एन है डेल्टा सो टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई पी माइनस डेल्टा बट व्हेन अल्फा इज स्मॉल when alpha is small then tan alpha is equal to alpha when alpha is small then tan alpha is equal to alpha and delta is neglected when alpha is small then tan alpha is equal to alpha and delta is neglected so this implies alpha is equal to y by p. So this is your equation number 4. Y by p is your equation number 4. Now see when alpha is small tan alpha is equal to alpha and delta is neglected. एटा कहीं की हला देखो एठी जेहेतु करके लिखि दबो जे एटा मैथमेटिक्स टा जे साइन थीटार मूल्य है थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3
plus theta 5 by factorial 5 and so on. cos theta ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1 minus theta square by factorial 2 theta 4 by factorial 4 and so on. sin theta ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଏତିକି, cos theta ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଏତିକି, ଏରକ and so on. ଧରାଯାଉ theta is equal to 0.01, ତେବେ theta square କେତେ ହେବ? तेणु दशमी पर दीटा अच्छे मैंने ये चार्टा हम 1 2 3 4 थीटा क्यूब केते हम ये दीटा अच्छी माने ये छोटा हम 1 2 3 4 5 6 तेणु थीटाटा जिते बड़े सान हम तार हायर पावर्स गुड़ा आस्ते आस्ते बहुत सान हो, सो ऑल द हायर पावर्स आर नेग्लेक्टेड, पुणी आहरी हरण हो, तेणु खाली के थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा 4 एगुड़ा सान हो, फेर आहरी हरण हो सान हो, तेणु व्हेन थीटा इज स्मॉल sin थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1, तेबे tan थीटा इज इक्वल टू केते हो? तेणु tan थीटा हैला sin थीटा बाई cos थीटा, तेणु sin थीटा हैला थीटा cos थीटा हैला 1, तेणु थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल tan थीटा इज इक्वल टू थीटा. Similarly, when alpha is small, tan alpha is equal to alpha. आउ डेल्टा टा कहीं नेग्लेक्ट है, देख यहीटा करें मिरर इमती नहीं एटा प्रिंसिपल से हेटा पी बर्तमान एठू नहीं ऑब्जेक्ट एवं एठू जो लंबटा टाणीचे यहीटा हूँ वाई एवं यहीटा धरचे आम आल्फा. जिते आल्फाटा सान हो आम यहीटा आल्फा आहरी सान हो गला, एठू लंब टाणीबा जिते आल्फा सान सान ही आसो, देख सेते बेले डेल्टाटा थिला एतिकी बड़, बर्तमान डेल्टा हो गला एतिकी बड़, आहरी सान ना आहरी सान हो, डेल्टाटा आस्ते आस्ते कमी कमी जीव, तेणु ताको आमे नेग्लेक्ट करुचे. तेणु दुईटा कथा कहनी, व्हेन थीटा इज स्मॉल sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा. एवं जिते आल्फाटा स्मॉल सेते डेल्टाटा भी स्मॉल हो, तेणु आम लिखले व्हेन अल्फा इज स्मॉल देन tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड डेल्टा इज नेग्लेक्टेड. Similarly, considering the triangle ACN, now considering the triangle ACN, now considering the triangle ACN, tan theta n by cn, an by cn, n टा हला y, cn टा को कर देले pc माइनस pn इज इक्वल टू y by पोलू सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर पोलू नॉर्मल डेल्टा. Again, when theta is small, then tan theta is equal to theta and delta is neglected. So theta is equal to y by r. Theta is equal to y by r. This is your equation 5. Similarly, considering the triangle AIN, tan phi
tan phi is equal to n by in, an by in. An is your y. In can be written as pi minus pn. Pi minus pn is equal to y by pole image distance minus pn is your delta. But when phi is small, then tan phi is equal to phi and delta is neglected. Tan phi is equal to phi and delta is neglected. So this implies phi is equal to y by q. This is your equation 6. This is your equation 6. Now putting the value of equation 4, 5 and 6 on equation 3, we can write. Putting the value of equation 4, 5 and 6 on equation 3, we can write. से इक्वेशन 3 आमर थिला अल्फा प्लस फाइ इज इक्वल टू 2 थीटा. तेणु अल्फाटा है y बाई पी, फाइटा थिला y बाई क्यू इज इक्वल टू 2 थीटा. थीटाटा है y बाई आर. तेणु y बाई पी प्लस y बाई क्यू इज इक्वल टू 2y बाई आर. तेणु y कॉमन नहीं गले. 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 2y बाई आर. y काटी देले और 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 2 बाई 2f because radius of curvature is equal to twice focal length. Radius of curvature is equal to twice focal length. And 2 कटियल, that is 1 by p plus 1 by q is equal to 1 by f. तेणु ये p टाक भी u v टर्म लिखा जा पार 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. एटा मैं अलग नोटेशन पढ़ाऊँगी. तेणु ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है p, इमेज डिस्टेंस है q, फोकल लेंथ है f. तेणु तांका भितर रिलेशन है 1 by p प्लस 1 by q इज इक्वल टू 1 by f. देख यहाँ को पुणी मुझे थे कहूँ ये एक्स वाईटा है कंकेव मिरर, पीटा है पोल, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल आउ सेंटर ऑफ कर्वेचर को जुग को बढ़ाओ, जुग करी बढ़ाओ. यहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस उपर गोटे ऑब्जेक्ट नेल. एठू लाइटा जाइए पड़ा एठी एवं एटा को जॉइन कले एटा है नॉर्मल. तेणु नॉर्मल सहित इनसीडेंट रे जो कोण करे एंगल ऑफ इनसीडेंस एटा जेति की है ए कोण सेति करी बढ़ा जेठी छेद करिवो प्रिंसिपल एक्सिस सेटा है इमेज. तेणु एठी है ओ ऑब्जेक्ट, आई है इमेज. जोठी मीट कला से गोटे लंब टाण, ता डिस्टेंस को धर वाई और पोल ता पर्यंत दूरता को धर डेल्टा. ऑब्जेक्ट पाखर एंगलटा को धर अल्फा, एटा को धर थीटा, एटा को धर फाइ. तेणु प्रथम ए ओ सी ट्रेंगल नेल, तार बहिस्थ कोण अंतरस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर समष्टि संगे समान. तापर ए सी आई को नेल, तार बहिस्थ कोण अंतरस्थ दूरवर्ती कोण द्वयर समष्टि संगे समान. एवं दुईटा को जोग कर वियोग कर तुम निजे देख जमी आई आर को काट. ये आम वियोग करे. तेणु आई आर को काटिदेला अल्फा थीटा फाइ ये 3टा एंगल जमी रही.
तापर तीनटा समकोणी त्रिभुज को नब AON ACN AIN सेनु अल्फा थीटा फाइ मूल्य बाहर करदेव सेटा को पुट करदेव देले रिलेशन बाहर जीव 1/p + 1/q = 1/f। वर्तमान केस 2 इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एटा कॉन्केव मिरर जाइला एटा कॉन्वेक्स मिरर करा अछि। यार चित्रटा है इंपोर्टेंट चित्र करदेला पर तुम सब करदो सिमती लिखले एटा है XY है कॉन्केव मिरर ए कन्वेक्स मिरर यार P है पोल एठो ऑब्जेक्ट नेल ये है ऑब्जेक्ट लाइटा जेठी पड़ा लेट इट बी ए एठो लंब टाणी एटा है N पोल पाखरु एटा है डेल्टा ए लंबर लेंथ है y एटा इंसिडेंट रे पड़ला पर रिफ्लेक्ट होगी चलियो एटा है रिफ्लेक्टेड रे आको पछुआ बढ़ा एटा जेठी मिट कला सेटा है I ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा थीटा फाइ इंसिडेंट रे सहित नॉर्मल जो कोण करा सेटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे सहित नॉर्मल जो कोण कला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एटी सिमती आमे लिखले लेट XY represents the convex mirror of which P is the pole and C is the center of curvature. C is the center of curvature. Now light moving from the object O which is on the principal axis, light moving from the object O falls upon the mirror at the point A and is reflected along AI and is reflected along AI along AT and is reflected along AT. Now AT is extended backward
such that it will meet the principal axis at the point I. That is, I represents the image of the object O. I represent the से कुछ ओ देरु लाइट गला ए बिंदु रे पड़िला एवं एटी डायरेक्शन लो रिफ्लेक्ट हे गला याकु पछुआ बढ़ेलो जोठी प्रिंसिपल एक्सिस को छेद कला सेटा हला आई. सो आई रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ. Now, a normal is drawn from the point A to the principal axis such that it will meet the principal axis at the point N. Let AN is equal to Y and PN is equal to delta. Here PO is equal to object distance is equal to P. PI image distance is equal to Q. PC is equal to radius of curvature is equal to R. Angle AON is equal to alpha. ACN is equal to theta and AIN is equal to phi. एटा आम धरले जमी आग तेणु आग केस जहाँ ए केस पूरा सामान सब ना भी मुझे सामान देती सब कर केवल चित्र टिके अलग से रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली आसिक छेद करूला प्रिंसिपल एक्सिस को एटी किंतु से पलि जाऊँगी ताकू पछुआ बढ़ेले सी प्रिंसिपल एक्सिस को जो छेद करीटा है इमेज. तेणु एटा अवास्तव प्रतिबिंबटा माने रियल गार नुहे तेणु मझे मुझे छाड़ करदेनी. तेणु वो है ऑब्जेक्ट आई है इमेज. यहाँ
सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बिंदु एटा लंब तेणु एल ए सी एटा हूँ लंब इनसीडेंट रे सहित नॉर्मल जो कोण करे एंगल ऑफ इनसीडेंस आउ रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सहित जो कोण करे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तेणु आग क्वेश्चन आम जमीती करथिले एटा पूरा सेमितिका आम धरथिले प्रथम एंगल एओसी तापर एसीआई एटा भी सेमती धरिबा। नाउ कंसीडरिंग द ट्रायंगल AOC now considering the triangle AOC त्रिभुजर बहिस्थ कोण है आई AOC त्रिभुजर एटा बहिस्थ कोण अंतरस्थ दूरवर्ती कोणद्वयर समष्टि संगे समान अल्फा प्लस थीटा इक्वेशन 1। सिमिलरली considering the triangle ACI एटा AOC ACI यार बहिस्थ कोण एठी हला फाई फाई इज इक्वल टू एकोण प्लस एकोण एटा आर माने एटा प्रतिपकोण तेणु वर्तमान आर प्लस थीटा और आर इज इक्वल टू फाई माइनस थीटा इक्वेशन 2। तेणु आई आउ आर को मु काटिया पई गोटे पाखु भिनै नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from equation 1 equation 2 from 1 1 ରୁ 2 वियोग कर तेणु थिला I इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा R इज इक्वल टू फाई माइनस थीटा आपको वियोग करनी वियोग प्लस तेणु I जहाँ R से कटिगला 0 इज इक्वल टू एठी रहिला अल्फा माइनस फाई प्लस 2 थीटा आपको टे सजै के लिखिदेले और फाई एटा पर कि नहीं गनी एटा यार पर कि नहीं गनी माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा इक्वेशन 3 फाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा इक्वेशन 3। तेणु आम सब बेले देखा जमती आई आ आर को रखा ना देले ए बेस एंगल जो 3टा आम धरीचे अल्फा थीटा और फाई यारिटा हमर गोटे इक्वेशन आसीबो। नाउ कंसीडरिंग द ट्रायंगल AON नाउ considering that triangle AON tan alpha n by ON AN by ON is equal to AN by ON टाको लिखिदेले PO प्लस PN PO प्लस PN और tan अल्फा इज इक्वल टू y by PO पोल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस डेल्टा but when alpha is small then tan alpha is equal to alpha
and delta is neglected. Tan alpha is equal to alpha and delta is neglected. So alpha is equal to y by p, equation 4. Again, considering the triangle PCN, tan theta is equal to n by nc, an by nc is equal to n, nc टाकू कर देले pc minus pn is equal to y by पोलू सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर और pn टहला डेल्टा. But when theta is small, then tan theta is equal to theta and delta is neglected. So theta is equal to y by r, equation 5. Lastly, considering the triangle AIN, lastly considering the triangle AIN, tan phi. तेणु tan phi है n by ni, an by ni एक सजी के लिखी देले. So this is equal to n ni की कर देले pi minus pn, n टाहला y, पोलू इमेज डिस्टेंस, pn तो डेल्टा. But when phi is small, then tan phi is equal to phi and delta is neglected. So phi is equal to y by q, equation 6. तेणु बर्तमान तीनटा ट्रायंगल आम तीनटा जिनस बाहर करदेले जे tan alpha रु alpha रो मूल्य बाहर कले, tan theta रु theta रो मूल्य बाहर कले, tan phi रु phi रो मूल्य बाहर कले. Now putting the value of equation 4, 5 and 6 on equation 3, we can write 4, 5, 6 रो मूल्य बर्तमान आम 3 लो पुट कर देले. 3टा किस थिला ना phi minus alpha, तेणु phi है y by q, alpha थिला
y by p is equal to 2 theta. Theta is equal to y by r. 2 y by r. एमती y एठी कॉमन नहीं गले 1 by q minus 1 by p is equal to 2y by r. अर्थात y कटिगला. बर्तमान साइन कन्वेंशन पकेबा किस ना पोल रु बाँ को थिले नेगेटिव पोल रु डाहाण को थिले पॉजिटिव. ताने पोल रु इमेज एटा हला इमेज डिस्टेंस एटा रहइबो पॉजिटिव. पोल रु सेंटर ये हला रेडियस ऑफ कर्वेचर तेणु ये भी हम पॉजिटिव. पोल रु ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एटा हला पोल रु बाँ को अछि सो नेगेटिव. तेणु आम लिखले बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन P is negative, Q is positive and R is positive. So Q टा पॉजिटिव तेणु लिखले 1 by Q माइनस P टा हूँ नेगेटिव तेणु माइनस 1 by माइनस P इज इक्वल टू 2 by R टा पॉजिटिव तेणु सिंपल लिखिदेले. और 1 by Q प्लस 1 by P इज इक्वल टू 2 by R. और सजे खाली लिख देनी 1 by P प्लस 1 by Q इज इक्वल टू 2 by R. 2 R है 12 जेहेतु रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस फोकल लेंथ. और 1 by P प्लस 1 by Q 2 कटिगला 1 by F. तेणु जे प्रथम आम जो पढ़े थे इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर 1 by P प्लस 1 by Q इज इक्वल टू 1 by F. तेणु कन्वेक्स मिरर भी सेया हला कॉन्केव मिरर जहाँ होता कन्वेक्स मिरर भी सेया हला 1 by P प्लस 1 by Q इज इक्वल टू 1 by F. तेणु ये दीटा जाक जो लॉन्ग क्वेश्चन ये दीटा लॉन्ग क्वेश्चन जे एस्टाब्लिश ए रिलेशनशिप among P, Q and F in case of concave mirror or convex mirror. तेणु दीटा जाक लॉन्ग क्वेश्चन 1 by P प्लस 1 by Q इज इक्वल टू 1 by F. U V टर्म लिखले 1 by U प्लस 1 by V इज इक्वल टू 1 by F. तेणु ये रहा.